Okay, hi everyone. Welcome to the KP classes. So today we are going to discuss about the architecture aptitude questions from NATA 2023 paper. So from the last few sessions, like yesterday, we had a quantitative aptitude questions that we discussed from the 2023 paper only, and that was the shift one paper. We are having a shift two paper also. We will discuss all those questions paper from different streams like drawing aptitude, architecture aptitude, and your quantitative aptitude in the next sections also. So today I have selected very few important questions from the NATA 2023 paper. So okay, let's start the session and we will discuss about the questions. First, what I'm doing, I'm sharing just only one question on the screen. What you have to do is like you just practice by your own what will be the right answer for the session, right? So the first question is, what is the architectural element indicated as a chord? As you can see in the image, there is an architecture image as you can see, and there is a section called, you can see from here that there is an orange part and जहाँ पे A लिखा हुआ है, that's written A, and they are asking about the right option. So we are having four options, like the first one is your flying buttress, second one is vault, third is your domical vault, and fourth is pendentive. So what you have to do, because I'm giving you a few tricks also for the preparation, because our motto is not to discuss the paper only today. I'll be giving you the few tricks because as your exam is very near, you have very less time for the preparation. So make your own strategy also, make your own preparation strategy also, like day one what you have to do, day two what you have to do. You can make a 15 days plan for your self study, right? Also, whenever you are practicing the question papers, the previous, especially the previous year question papers, if you are practicing, the very important thing is don't run for the right option. कि मुझे सिर्फ एक right option पता है और ठीक है मेरा तो done हो गया. नहीं. What you have to do, you have to see the remaining options also. Like if you can see the four options, sorry. So there is only one option which is correct because this is an MCQ question, right? There is MSQs also, the multiple selection questions in your NATA part, but that comes into the drawing aptitude only, not in the architecture aptitude. So, so the right option is your pendant. D is the right option for this question. But what about the three remaining options? That is, the first is your flying buttress, second is your vault, and third is your domical vault, right? So we need to study about these three options also, because really आगे क्या होगा जब सेकंड फेज आपका एग्जाम होगा तो आपको वो थ्री ऑप्शंस भी मे बी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? एंड एक और चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for the architecture part, when you are practicing about the architecture aptitude part, जब भी कोई questions आता है, there are 3 or 4 parameters that you need to know about a particular question. Suppose कोई भी आर्किटेक्चर एलिमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है या कोई भी बिल्डिंग्स आपसे पूछी जा रही है या किसी आर्किटेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सो मेजरली आपको दो तीन चीजें, दो तीन पैरामीटर्स पर प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट इज योर व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, या जो भी स्ट्रक्चर है उसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है. स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एज यू नो, जैसे कि आपने बहुत सारे गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा है, बाइजेंटाइन पढ़ा है, राइट? देयर आर सो मेनी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर. तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको पढ़ना होगा, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ना होगा. ऑल्सो द सेकेंड इज हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. थर्ड इज योर मटेरियल, यू नीड टू नो अबाउट द मटेरियल्स, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल वाला जो पार्ट है कि क्या मटेरियल्स उस पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में यूज हुए हैं, ठीक है? So the fourth is the right answer, pendentive, but we will discuss, I'm going to explain you about the fourth option कि pendentive कैसे आपको like देखना है. Now the first thing, as you can see, there are three images as I have compiled किया है आपके इस slide पे. So the correct option is D.
Guys, you can take the screenshot of the particular images also, so that जैसे ही session over होता है, you can do your own preparation by just self revising all these topics, all these questions also. So the fourth is your pendentive. This is the right option. In the first thing, this is the image for the flying buttress. As I want to know, like कि buttress का meaning क्या होता है? Buttress is a support, right? It is giving the building, the walls of the building, the exposed wall of the building, उसको एक support दे रहा है. And दूसरा architecture में support is important, like the structure part जब आप देखते हो, which is equally important. But the thing is, the structure need to be very aesthetic. एक aesthetic sense होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? So this is the flying buttress, and the question may be आपके second जो attempt है आपका 3rd जून को, उस दिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक सपोज फ्लाइंग बटरेस एक ऑप्शन दे दिया है, तो ये किस बिल्डिंग का पर्टिकुलर इमेज है? सो देयर इज अ बिल्डिंग कॉल्ड नोट्रे डेम कैथेड्रल, राइट? आपको पता होगा पेरिस का. सो उसमें ये फ्लाइंग बटरेस यूज किए गए हैं, ठीक है? नाउ द सेकंड ऑप्शन इज अ वॉल्ट. व्हाट इज वॉल्ट? जैसे कि मान लो कोई सीलिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर हम फ्लैट सीलिंग बना देते हैं, सीलिंग तो सबको पता होगा, तो सीलिंग में अगर कुछ आप डेकोरेटिव एलिमेंट यूज करते हैं, लाइक देयर आर फ्यू ऑफ द आर्चेस और लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ आर्चेस, सो मेनी आर्चेस जस्ट फॉर द एस्थेटिक पर्पस, नॉट लाइक वो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है आपको, राइट? वो सिर्फ एक एस्थेटिक पर्पस के लिए, जैसे एज यू कैन सी इन द सेकंड इमेज, देयर आर सो मेनी कर्व्स in that particular ceiling. So this is what we call as vault, right? And there are so many types of vault, but आपको सिर्फ डोमिकल वॉल्ट तक ही रहना है आपके एग्जाम्स में इतना ज्यादा, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू द अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? बट एक ब्रीफ आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सी section is domical vault. So this is your domical vault. As you can see, this gray part, right? And this segment, these segments, as you can see, there is a first segment, there is a second, there is a third segment, there is a fourth segment also जो कि rear side पे है, which you can't see, right? These are called pendentives, fine? So इसे हम spherical surface के जो triangular segments आपको दिख रहे हैं, ये आपके pendentives कहलाते हैं. I hope आपको ये first question समझ में आया होगा. Now you have to make your notes. आपको ऐसी अपनी प्रिपरेशन करनी है. Just take out your previous year question papers जो अभी 2023 का है, shift 1 and shift 2. Make your own notes and try to write down some important points for the remaining options also. Okay? Don't run for the right option वाली कि इसका option मुझे कहीं से दिख गया, अच्छा D है तो मुझे ये याद करके जाना है, नहीं. You just make your notes. Remaining जो topics हैं, जो remaining options हैं, sorry, उसका क्या इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन में आ सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में क्या आ सकता है, राइट? वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है? नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. सी, जो मैंने अभी टेक्निक बताया कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है. देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जनरल नॉलेज वाला थिंग्स आल्सो, सो यू डोंट नीड टू डू very detailing वाला part in everything, right? So the second question is identify the tile with the traditional design. So this is the design as you can see in the image, right? So what you have to do कि आपको tiles वाली चीजें तो पहले आप पढ़ लीजिएगा आपको Google पे, because we don't have enough time, so we can't explain everything in this particular session. But जितनी important चीज है जो आपके एग्जाम से related है, hopefully हम वो सारा आज discuss करेंगे, ठीक है? So the correct option is the first option जो है, the option is correct option is your Athangudi tiles. Athangudi tiles जो है, अब as I have written, these are handmade tiles. Okay, so first basic things that you need to know is these are the handmade tiles which are used to decorate the interiors of the houses. Now interior of the houses में बहुत सारे आपके elements आते हैं, like interior of the houses में there is a bedroom section also, living room sections also, there is a kitchen, there is a bathroom. Now the thing is the tiles जो है वो बहुत ही आपको उसके functions पे आपको समझना पड़ेगा. You can't use Athangudi tiles in toilet and bathroom because the water, because वो क्या होते हैं, the water areas होता है, wet areas होता है, every time you are using
water there in these two sections. So वहाँ पे आपको ये अथनगुड़ी tiles नहीं use करना है. These tiles are used for the decorative purpose only in the living area. Maybe in the bedroom you can use, but mostly living room and the drawing room वाला section जो है वहाँ पे इसको use किया जाता है क्योंकि that is the dry area, right? थोड़ी बहुत चीजें उसके डिजाइन पे भी है. They have a distinct geometric design and come in different sizes and shapes. We all know every tiles has their different sizes and shapes, right? So the very important thing यहाँ पे जो है जो आपको नोट करने की जरूरत है, the standard colors of these tiles जो आपका है red, mustard, green and grey. So these are the important colors जो आपके अथनगुड़ी tiles में use किए जाते हैं. As you can see in the image, the floral part has the mustard color, right? This square part is of the red color, right? You can see the leaves are for the green color, and after that there is no white, there is a grayish color. Okay, so these are the four colors that we use in अथनगुड़ी tiles. Okay, so these are the standard colors. Standard colors का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे restricted कर दिया गया कि उसके बाद आप कोई colors use ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. But ये standard colors हैं जो basically यूज किए जाते हैं. ठीक है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, अगर कुछ सैंपल सर्च करेंगे, यू विल सी कि देयर आर सम स्काई ब्लू टाइल्स एंड मेनी ऑफ द कलरफुल टाइल्स यू विल सी देयर. फाइन. Now coming back to the next question, that is your third question. Which of the following tools is used for cutting soft bricks? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करें, तो यू जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर्स इन अ कॉलम. ओके, जस्ट राइट द आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड पार्ट एंड 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 15 20 व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर कमिंग, जस्ट राइट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वन कॉलम and in the second column just write the topic. Like the question number one was from which topic? It was from the history of architecture. Yeah, you can say it was from the that architectural terminology, right? तो वो आपको एक जगह लिखना होगा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब आप लास्ट 5 years के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे एंड व्हेन यू विल बी मेकिंग अ स्कोर कार्ड और व्हाटएवर, आप जब अपने जितने भी क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए हैं, यू कैन सी द वेटेज. लाइक यू कैन सी द अच्छा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट? एंड सेकंड चीज है कि आपका लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हैं, आपको वैसे ही करना है. लाइक टॉपिक वाइज यू कैन सी द वेटेज, राइट? नाउ समवन इज आस्किंग कि मैम ये क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में रिपीट हो सकते हैं क्या? सी द क्वेश्चंस लाइक हाँ रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मेजरली ये एक जो फर्स्ट बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे, इसलिए मैंने बोला है कि जो रिमेनिंग ऑप्शंस है आप उसको भी पढ़िए, आप सिर्फ राइट ऑप्शंस पर मत जाइए, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो अगर आप प्रीवियस ईयर के 2 या 3 साल के भी पेपर बहुत अच्छे से एक अपना नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, यू विल बी फील लाइक आप जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलेंगे आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल लगेगा. ठीक है, सो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए. ठीक है, तो वन थिंग आई हैव टोल्ड यू कि लाइक आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 का वेटेज मतलब टॉपिक्स जरूर मेंशन करें कि ये किस टॉपिक से आया था. सेकेंड टॉपिक वाज फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल, राइट? थर्ड क्वेश्चन वाज फ्रॉम द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपके जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं लाइक आपको टूल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज आल्सो कि बहुत सारे जैसे कि स्काफोल्डिंग एक टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब क्या होता है. सो आई कैन गो इन द डिटेल अभी बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स राइट नाउ, राइट? So the third question is which of the following tools is used for cutting soft bricks? Bricks को cut करने के लिए कौन सा tools use करते हैं? Like the 4 of the options, जो तीनों options जो ऊपर के हैं like the spirit level, hawk, plumb line, these are for the measurements purpose, not for the measurement purpose. इसको use किया जाता है just to check the horizontal surface is parallel or not, right?
द वर्टिकल सरफेस जो कि प्लम्ब लाइन आपने देखा होगा, एक प्लम्ब एक टूल होता है जिससे हम परपेंडिकुलर वॉल को मेजर करते हैं कि वो वॉल जो है वो सीधी है या नहीं, राइट. D1 is your sketch hammer. So I'm going to show you the image of this particular tool. So this is your sketch hammer. As you can see, the second image is the right answer for this question. This is your plumb line. Okay. So और भी जितने ऑप्शंस हैं आप थोड़ा सा अपनी गूगल पे के रख लीजिए, उसके पास इमेजेस सर्च कीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा बिकॉज बहुत टाइम जाएगा आपका, एक एक ऑप्शंस के लिए इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. आपके नाटा के एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है आपको फिगर बेस्ड ही चीज़ें पढ़नी है, लाइक अपनी विजुअलाइजेशन को आपको इम्प्रूव करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है. Okay. Sorry. Now the next question is pick the odd image out of the following. Again, this is a question from building construction, but यहाँ पे उस question को as a reasoning point of view से दिया हुआ है, right? Now there are 4 options. अगर मान लो किसी ने building construction के बारे में नहीं पढ़ा है, उसे इन patterns का पता ही नहीं है कुछ, right? So what we can do कि आपका जैसे कि ए बी सी डी है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, क्या किसी को लाइक अगर ये मैसनरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मैसनरी एक टर्म होता है, ये आपके 3 तरीके के मैसनरी होते हैं, एक आपका ब्रिक मैसनरी होता है, स्टोन मैसनरी होता है, टाइल मैसनरी होता है. अब मैसनरी का मतलब क्या होता है? मैसनरी इज लाइक यू आर यूजिंग द कॉन्क्रीट with that particular material. Suppose मान लो कि ब्रिक है और जब हम ब्रिक वॉल बनाते हैं तो बहुत सारे ब्रिक से एक वॉल बनती है. सो व्हाट इज द adhesive material that we are using? That is your concrete, or you can say that is the mortar, right? So that is your masonry. So the masonry is categorized into 3 sections. That is, the first one is your brick masonry, the second one is your stone masonry, and the third is your tile masonry, right? So you can write these things and you need to search about these all topics. Now the fourth जो ये options आपका दिया हुआ है, ये आपकी stone masonry से आया है, ठीक है? ये आपके stone masonry से है. Now the stone masonry is categorized into 2 things. The first is your ashlar masonry and the second is your rubble masonry. ठीक है. So ashlar जो rubble masonry होता है वो irregular, अभी मैं आगे की PPTs में भी आपको थोड़ा सा explain कर देती हूँ. And I have mentioned what is ashlar masonry and what is rubble masonry. Okay, so in ashlar masonry is a type of stone construction where all stones are dressed or cut to a uniform shape, size, and surface appearance. So now the first image, as you can see, the A वाला जो image है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि वो proper एक uniform shape में है. There is no any variation. ऐसा नहीं है कि कुछ stone छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, right? So A जो है वो आपका ashlar masonry है, but the remaining options, as you can see, they all have irregular shapes, irregular sizes, right? They are not uniform. So the thing is, the question was like, अगर आप अपने logical sense से भी देखते तो आपको समझ में आ जाता कि अच्छा ठीक है, ये तो stones जैसे भी लगा दिए गए हैं, but in that A वाला section, as we can see, कि proper एक uniform shape और एक uniform size दिया गया. So this is your ashlar masonry, and these all are options for the rubble masonry. So this was the concept behind this question. Now again ये question किस topic से था? ये था building constructions. ठीक है. तो अभी तक हमने देखा कि 2 questions जो थे वो आपके building construction से थे. ठीक है. Now there will be few questions that they will ask you about the author. They will ask you about like the phrases, okay, the important phrases, important quotations. तो वो आपको पता होने चाहिए. But the thing is, what is important in this, आपको सिर्फ architects के quotes याद रखने हैं, आपको architects के books याद रखनी है. ठीक है. अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पेंटर्स की भी अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है या कोई phrases है, अगर आ जाता है तो इट्स ओके, राइट?
बट आप सिर्फ अपने अभी जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, एक एक दिन आप एक एक आर्किटेक्ट पे काम कीजिए, उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़िए, उनके बुक्स का नेम पढ़िए, नॉट बुक्स, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. ठीक है. ओके. So now we were discussing about this, like buildings too are children of the earth and sun. Like this was the phrases इसने quote किया है. So the correct option is your FL, right? The correct option is B. Now यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना लिख सकती थी कि हाँ, option B is your correct answer. फ्रैंक लॉयड राइट, दिस इज एफएल राइट. एंड बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ने की क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड. अब्राहम लिंकन was the president of the US, right? Picasso was a painter. Like the Mahatma Gandhi was a politician and the freedom fighter, right? तो तीनों के जो प्रोफेशंस हैं वो काफी अलग हैं. as we can see, FL Wright is an architect, so we need to study about him because we are going to be in that particular profession, right? तो आपको ऑप्शन बी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पे लगाई है, दिस इज फॉलिंग वाटर, राइट? सो दिस इज द फेमस वर्क ऑफ FL Wright. So maybe in the next paper they can ask you about this particular question. ठीक है. And there are certain things that I have mentioned. As you can see, Falling Water is a house designed by the architect FL Wright in 1935. In the that you can see, you can take the screenshot and you can read, or you can do your self study with this particular presentation, right? Now, दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने बताया, आप किसी भी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपको आर्किटेक्ट पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर स्टाइल पता होना चाहिए, एंड मटेरियल पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल आपका क्या है? इट इज मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर. ओके. सो दीज आर द आर्किटेक्चर, दीज आर द स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर जो FL Wright अपने वर्क में यूज करते हैं. ठीक है. Okay, so the next question is just like the general knowledge wala thing. Who is the architect of Vidyanagar, Jaipur? Jaipur में जगह, that is Vidyanagar. So who is the architect of Vidyanagar, Jaipur? And the next question, who said when we build, let's think that we build forever? ठीक है. तो अभी जैसे कि मान लो यहाँ पे विद्यानगर जयपुर का आर्किटेक्ट कौन है, right? So the correct option is VV Doshi. So VV Doshi का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में, और रहेगा भी. सो हर बार ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है. नाउ द थिंग इज, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो चार्ल्स कोरिया पे भी लाइक मूवीज बनी है, देयर आर सर्टेन बिल्डिंग्स आल्सो. तो आप थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि आपको सारे ऑप्शंस, मैंने क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चंस में आइडिया दे दिया है कि आपको किस तरीके से यू नीड टू प्रिपेयर, तो यू मेक योर ओन नोट्स रिमेनिंग ऑप्शंस पे भी, और तभी करना है अगर वो किसी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से कुछ रिलेटेड है, तभी करना है. ठीक है. Now the fourth option is your BV Doshi, which is the correct option. So BV Doshi का important जो points है जो आपको जानना है, पहली चीज कि he was the Pritzker Prize winner. Pritzker Prize I think बाकी सारे students को पता होगा, because if you are into the architecture वाला thing, you're going to appear for the NATA exams, and I think JEE का भी paper you all have given. So BV Doshi के बारे में तो सबको पता होगा, right? So he died in this year only, on January 24, I guess, maybe, and he was the Pritzker Prize winner in 2018. Okay, the very important thing, he is the first Indian architect who win this award. Okay, few of the famous works आप गूगल पे भी जाके देखेंगे, प्लस मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि IIM जो है उसका जो आर्किटेक्चर है वो BV दोशी ने ही किया है. ठीक है. And there are certain examples that I have mentioned here. Aranya low cost housing indoor one. Okay, and this is the IIM Bangalore, that 1977. The years you don't need to remember for your exam. This is not really important for your exam. Okay, so BV Doshi ka the first important point is 2018 Pritzker Prize winner. And what is this Pritzker Prize winner? Just like हर
उस फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड सबके लिए होता है. इन आर्किटेक्चर देर इज अ प्रिस्क्राइब्ड प्राइज विनर एंड वेरी फ्यू आर्किटेक्ट, एंड वो हर ईयर हर साल किसी एक आर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके, वहाँ पे मिलता है. तो हमारे इंडिया में 2018 में पहला जो प्रिस्क्राइब्ड प्राइज था वो भी विदुषी लेकर आए थे. ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन अगेन वही आपका कोटेशंस पे है. सो द करेक्ट ऑप्शन वाज बी. यहाँ पे मुझे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कुछ और ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मुझे वैलिड नहीं लगा कि हम बाकी ऑप्शंस पे बात करें. ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा. पर आपको थोड़े बहुत फ्रेजेस लाइक हु सेड वाले क्वेश्चन देख लो कि 2 बार आ चुके हैं, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो एक बार आप अपने नोट्स बना के या जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप केपी एग्जाम प्रिपरेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे यू कैन सी द पीडीएफ ऑफ दीज सर्टेन थिंग्स लाइक द फ्लैग्स. फ्लैग्स के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं कि आप फ्लैग्स सिग्निफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. Okay, now this is the question from your world architecture. Like you need to know about कि कौन सी बिल्डिंग है. ठीक है. सो बिल्डिंग का इमेज दे देगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, वहां से आपको बताना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली दिस इज बर्ड्स नेस्ट, सबको पता है, इट इज इन बीजिंग. ओके. सो द लार्जेस्ट स्टील स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. There are certain important points you need to know about this particular building. So the first thing that you need to know is the largest steel structure in the world. Okay, Weaving bird's nest बोलते हैं. And जो भी चीजें आपको important points यहाँ पे मैंने लिखे हुए, you can take the screenshot of this particular presentation, जो कि मैंने आपको बोला है कि अपनी प्रिपरेशन में बाद में जब सेशन एंड हो जाता है या whenever you see this सेशन, तो आप उस वक्त भी बैठ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. चलो, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है. So the question is, Great Bath is situated in which of the Indus Valley settlements? Options are given here. This is Lothal, Mohenjo-daro, Harappa and Dholavira. Okay, so the correct option is your Mohenjo-daro, because which lies in the Indus Valley settlements. Lothal is also there, but the correct option is your Mohenjo-daro. Now this is the image जो आपके question paper में था, right? So ये आपका जो था this particular image जो आपको options में दिख रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये ग्रेट बाथ वाला जो इमेज है, मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं, बट जब अगर आप इंडस वैली सेटलमेंट्स का विकिपीडिया ओपन करेंगे, सो यू विल सी देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट इमेजेस गिवन देयर. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आप अपने नाटा का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप कोई भी टॉपिक अगर उठा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जस्ट गो ऑन द विकिपीडिया वाला पेज में, because whatever the image that NATA is taking for their exam, वो सारे के सारे विकिपीडिया इमेजेस हैं. ठीक है. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में एक ओवरव्यू लेते हैं, आप वहां से अगर चीजें नोट्स वगैरह देख रहे हैं, तो आप उनके इमेजेस एक बार जरूर देख कर जाइएगा. दिस वाज द इमेज that they have taken from the Wikipedia page only. Okay, so this is the clear picture of this Great Bath. Okay, and this is in Mohenjo-daro. The Great Bath is a part of a large citadel complex. Of what is the citadel? That there is a term that I have mentioned. हर उस एरिया में पहले के टाइम पे कुछ ऐसे फोर्ट्स या टूम हुआ करते थे, या एक हाईली प्लेटफॉर्म एरिया होता था, सो दैट आप वहां से बाकी चीजों को दूर तक देख सकते. ठीक है. तो ये चीजें हैं, ये जो मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है, ये ग्रेट बात का है. मेजरमेंट्स आई डोंट थिंक दे कैन आस्क यू, बट स्टिल आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो ये आप याद कर लेना, मे बी दे कैन आस्क इन द नेक्स्ट पेपर. Okay, now the next question is, identify the types of staircase shown in the given image. So now this is the staircase वाला image. अब एक और चीज बहुत important है,
आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, देखो, A is the helical staircase and C is the spiral staircase. Well, cylindrical staircase कुछ होता नहीं है. If you will see तो आपको बहुत सारे images वगैरह दिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है. और बेसिकली आप staircases पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नेम्स कुछ बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, जैसे कि डॉग लेग staircase होता है. और यहाँ पे तो आई कांट ड्रॉ, बट आप एक बार प्लीज गूगल पे या जैसे भी आप एक बार चेक कर लो कि डॉगलेट स्टेयरकेस क्या होता है. हेलिकल स्टेयरकेस एंड स्पाइरल स्टेयरकेस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है. एज यू कैन सी, हेलिकल स्टेयरकेस एंड स्पाइरल स्टेयरकेस लुक्स सेम, राइट. सो दिस इज द इमेज जो कि क्वेश्चन में दिया है, वो किसका है. what is the right like identify the type of staircase shown in the given image. तो आपको एक right ऑप्शन बताना, जैसे कि मैंने बोला है बाकी ऑप्शंस भी आप जरूर उसके बारे में पढ़ेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दिस इज योर हेलिकल staircase. So this is the difference. I have added the image of this spiral staircase. As you can see, there is a perpendicular, there is a vertical structure which is added with that particular stair steps, not stair. That steps के साथ आप देखोगे कि वो connected है. Now what we call this perpendicular जो structure है, vertical structure, हम इसे क्या बोलते हैं? This is a naval post. In every staircase it is very important because that is जहाँ से आप लैंडिंग आपकी शुरू होती है, जहाँ से आपका स्टेप वन शुरू होता है, वहां पे आपको एक सपोर्ट के लिए एक स्मॉल पोस्ट देना होता है, दैट इज योर नेवल पोस्ट. और अगर आप देखेंगे हर लैंडिंग के बाद एक एक आपका वहां पे एक पोस्ट आपको दिखेगा, ठीक है. बट इन दिस केस, इन स्पाइरल स्टेयरकेस, यहाँ पे आपको ये नेवल पोस्ट आपके बेस से शुरू होता है until वो जहां तक आपका स्टेयरकेस जहाँ पे खत्म होगा, ये वहां तक जाएगा, ठीक है. बट in helical staircase there is nothing like this. You can't see any uh, naval post or something. Okay, so this is the difference. Now this was your C-shaped staircase. Okay, so I'm showing you the image जो मैं dogleg staircase की बात कर रही थी. अब देखो यहाँ पे आपको ये स्टेप्स दिख रहे होंगे स्टेयरकेसेस का, ठीक है. ये आपकी पहली लैंडिंग, सॉरी दिस इज नॉट द लैंडिंग, दिस इज द लैंडिंग जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है. यहाँ पे आपकी एक फ्लाइट पूरी होती है, वन फ्लाइट. सपोज आप अगर देख पा रहे होगे तो देयर इज 1 2 3 4 5 steps up there. So you have completed your one flight. Okay, now you will take a turn or left turn, and here you can see 1 2 3 4 5 and 6. So there are 6 steps. तो फिर वो आपकी सेकंड फ्लाइट शुरू हो जाती है. यहाँ से फिर आप रिवर्स में देखोगे, देयर इज अ थर्ड फ्लाइट. सो अगर आप टॉप से देखोगे, जब आप इसका प्लान देखोगे, आई होप सबको प्लान एलिवेशन सेक्शंस पता होंगे, बिकॉज आई थिंक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में आप अवेयर होंगे, राइट, जिसमें आपको प्लान एंड एलिवेशन दोनों चीजें पढ़नी होती है. नाटा में कुछ क्वेश्चंस आपके 3D विजुअलाइजेशन से भी आते हैं, राइट, और जहाँ पे आपको एक प्रॉपर 3D दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्लान ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज, राइट. तो अगर आप इसका प्लान देखोगे ना स्टेयरकेस का, इट विल लुक लाइक सी. या इफ यू विल फॉलो द लीनियर पाथ ऑफ सी, सो आप थोड़ा सा रोटेटेड सी होगा तो आपको वो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है. स्टेयरकेस में और क्या इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं, देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज लाइक, जैसे मैंने अभी एक नेवल पोस्ट बताया था, द वर्टिकल लाइन एज यू कैन सी हियर, दैट इज द नेवल पोस्ट. नेवल पोस्ट का मीनिंग आप पढ़ लीजिएगा. सेकंड आपको जो पढ़ना है, लाइक ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज राइजर, राइट, what is nosing. These are the topics that you need to study in the staircase. There is a term called balustrade or balusters, right. जैसे मैंने फ्लाइट की मीनिंग आपको समझाई, तो these are the important things or the terminologies as you can say. So there are few nomenclatures for the staircase. एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है. Fine. So we are running with the less time also, so थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे. बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे, यू कैन कमेंट डाउन, बाद में वी विल आंसर योर all the questions. Now the next question is, choose the odd
image out. As you can see, there are few images A, B, C, D, right? तो अगर मान लो कि हमारी प्रिपरेशन है भी नहीं इस क्वेश्चंस में, हमें नहीं समझ आ रहा क्योंकि पर्टिकुलर हर बिल्डिंग्स का आप कोई नाम, कोई ऐसा पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट नहीं है. It's the style of architecture that we need to know. So the three images A, C, and D are for the vernacular architecture. You know the meaning of vernacular architecture? Vernacular architecture means जो लोकल उनके जो कल्चर है या जो उनका मटेरियल है उसके साथ कोई भी बिल्डिंग्स अगर बनी है उसको नजर में रखते हुए अगर कोई बिल्डिंग्स बनी है तो दैट इज अ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर. And B, it's something like it is different. It is like modern architecture or something, right? So the vernacular architecture can be defined as a type of local or reasoning construction using traditional materials and resources from the area where the building is located. Fine. So the correct option is your B, और image out करना था हमें. ठीक है. ओके, आप सबको ये बिल्डिंग्स तो जरूर पता होंगी. The 4x4 2003 house on the left, designed by Tadao Ando in Haogo, Japan. Okay, so has a twin on the right. इसका आपको मटेरियल बताना है. So when I started the session, I told you whatever you are studying about, whatever the topic it is, because you are going to be an architect, so just make your own parameters like the architecture style, who is the architect of the building, what is the material you are using, and what is the location. The location, it is given. Architect, it is given, right? Material they are asking. So the material, the correct option is your concrete and wood. As you can see, the correct option is your C. Now the thing is, थोड़ा सा और क्या, जैसे मैंने बोला हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ आपको देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है. लाइक द आर्किटेक्ट टाडाओ आंडो का आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि पहला तो उनका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था वो मिनिमलिस्ट होता था. लाइक द मिनिमम अप्रोच से जो भी आपकी बिल्डिंग्स बनी है वो इट इज लुकिंग लाइक दैट वन, राइट. दूसरी चीज जो कि मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं करी है, बट ही इज ऑल्सो अ प्रिस्कर प्राइज विनर. ओके, तो वो भी एक प्रिस्कर प्राइज अवार्ड विनर के लिस्ट में है, विच इज आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि आपकी जो प्रिपरेशन में जो चीजें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कि अभी आपके ये क्वेश्चन में आ रहा होगा कि मैम ठीक है, इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में तो इंडियन आर्किटेक्ट्स इतने सारे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स लाइक बीवी दोषी, जैसे मैंने बोला, राज रिवल सर इज देयर. तो ये आर्किटेक्ट्स आपको याद रखने. बट इंटरनेशनल और फॉरेन आर्किटेक्ट्स में कैसे हमें पता चलेगा कि हम किस आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ें, कौन सा आर्किटेक्ट इम्पोर्टेंट है, राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते बिकॉज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना है. हम गेट आर्किटेक्चर का वी आर नॉट गिविंग द एग्जाम. सो वी नीड टू कीप योर प्रिपरेशन, लाइक जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही मिनिमलिस्ट अप्रोच से ही रखनी है, जस्ट लाइक दिस बिल्डिंग. So what you have to do, you just go to the Wikipedia page and print out those Pritzker Prize winner architects के नेम सारे आप निकाल लीजिए. वहां पे आपको कुछ फेमस आर्किटेक्ट्स का नाम मिल जाएगा और आप सिर्फ उनके बारे में पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में सिर्फ उतना ही आएगा. ठीक है, आई एम गिविंग यू द सजेशन ओनली, बट आई थिंक आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, लाइक हिस्टोरिकल मोमेंट है, और ये स्केचिंग थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है. जो मीडियम है वो ऐसा लग रहा है कि रेंडरिंग इमेज है ये, जो थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है, राइट. तो देयर आर द 4 ऑप्शंस, सो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. और मुझे लगा नहीं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए. बट द थिंग इज, आप लोकेशंस वाले जितने भी इंडियन जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आप वो भी विकिपीडिया से निकाल के आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं सारे यू नो मॉन्यूमेंट्स के बारे में. बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना. इंडियन जो मॉन्यूमेंट्स है ना वो सिर्फ इमेज बेस्ड ही आएगा. बाहर के जितने भी बिल्डिंग्स हैं वहां पे आपसे पूछेगा ओके व्हाट इज द मटेरियल, व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल एंड ऑल, हु इज द आर्किटेक्ट, बट नॉट इन इंडिया, बिकॉज इन आवर इंडियन आर्किटेक्चर every day there is some changes, right? So they are not going to ask you about that.
They will ask you about the location of that particular building. Right? Okay, so these are the few questions जो मैंने solve तो नहीं करे हैं PPT में, but I think आप सबको ये questions जो हैं आते होंगे, तो मैं एक बार जरूर डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज साइनोग्राफी. ठीक है, सो देयर आर 2 to 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि साइनोग्राफी में आपको बेसिकली क्या चीजें याद रखनी है फॉर योर एग्जाम. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज योर टाइमिंग्स, लाइक 3 to 9 का एक टाइम, 3 to 6, 3 or not 3, it will be 6 o'clock in the morning till 6 o'clock in the evening. After 3 hours there is a time पे जहाँ पे सन जो है वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है. सन जैसे जैसे अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है वैसे वैसे शैडो का साइज शेप चेंज होता जाता है हर उस ऑब्जेक्ट के लिए. सो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे देयर इज अ हाउस, राइट, एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया है, लाइट सोर्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और फिर यहाँ से एरो आपको पता है. अब आपको पता ही है कि अलोंग शैडो जो होता है वो सन के अलोंग ही बनता है ना. ओके, समवन हैज कमेंटेड दैट बी इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड. सो अभी थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द लाइट सोर्स और यहाँ पे आपको इसका शैडो बताना है. तो इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, पहली बात ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, शैडो शुड बी देयर, जो कि दिख नहीं रहा कि भाई इधर भी शैडो होना चाहिए. सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये सन के बिल्कुल अगेंस्ट बन रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, राइट. बी पे जाते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन? यहाँ डी में भी एज वी कैन सी कि देयर इज अ शैडो which is not correct, as you if you can resemble this particular surface, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लाइट सोर्स जितना नीचे अगर आपको दिखेगा द शैडो विल बी ग्रेट. ठीक है, जब आप यहाँ से कुछ रेफरेंस लाइंस लेते हो ना इनके हर वर्टिसेस के लिए, तो आपको वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे. पता नहीं आपने टेक्निकली शैडो के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट द थिंग इज ये परपेंडिकुलर लाइन आप एक रेफरेंस लेकर देख लेना. ये परपेंडिकुलर लाइन जितना कम होगा तो शैडो विल बी ज्यादा, बिकॉज जैसी रात होती है आपने देखा होगा द सन इज गोइंग टू रेस्ट, जैसी वो जाता है तो हमारा शैडो क्या होता जाता है, शैडो का साइज बढ़ता है. सो द सेम थिंग इज हियर. अगर शैडो बिल्कुल पीक पे होता तो फिर आपको, सन अगर बहुत पीक पे होता तो आपको शैडो बहुत कम दिख रहा होता या फिर दिखता ही नहीं. दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है, और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया था 6 o'clock इन द मॉर्निंग द शैडो विल बी लेस. 12 o'clock पे अगर जाके आप शैडो देखोगे तो वो बिल्कुल बिलो द सरफेस होता है, दिखता नहीं है. जैसे जैसे शाम होती है आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का या ऑब्जेक्ट का जिसका भी आपको शैडो देखना, शैडो का साइज बढ़ता जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड. Okay, so the correct option is B. Very good, whoever commented for this question. Now this is the top view of the given 3D form. This is a very easy question जिसमें टाइम ही नहीं लगता. हमें सिर्फ सर्फेसेस काउंट कर लेने थे. एक यहाँ पे सेंटर में एक स्क्वायर बन रहा है, उसके बाद एक फिर से रेक्टेंगल जैसा बन रहा है और एक और थर्ड बन रहा है. एंड दिस इज द फोर्थ. एज वी कैन सी देयर आर फोर. There is 1, 2 and 3 1. Sorry. Right, this is your 1, this is your 2, which is oblique surface जहाँ पे दिया हुआ है. This will be your 2 and again there is a oblique but बिल्कुल slope की तरह है और उसके opposite में है. So this will be your third. So this is the correct option. Now coming back to the next options वाली, या B is the correct option. यहाँ पे डबल लाइन दिख रही थी तो वो वैसे ही आपको नेग्लेक्ट कर देना है. यहाँ पे बहुत सारी आपको लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड देयर आर फ्यू छोटे छोटे स्क्वायर्स आर देयर व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. दो तो हो गई, राइट. सो इन केस इन योर एग्जाम इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट योर ऑप्शन कि यस ओके आई एम प्रीटी फाइन विद दिस ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और आपने क्लिक किया और यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू डू just for a moment, just take your 8 to 10 seconds and see the remaining options also. Maybe आप गलत हो सकते हैं, तो आप जरूर श्योरिटी बाकी ऑप्शंस को भी देखते हुए आपको
लेनी है, ठीक है. These are the few things that you can use for your exam now. That's why I'm telling you. Now, this is the question from your logo part. ठीक है. If you will download our app, there we have given that particular what we call the material, the free study material. Okay, we have given the free study material जहाँ पे logos मैंने बताया जिस तरीके से flags आपको क्या क्या important पढ़ना है वो वहाँ पे mention है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. Now इससे क्या पता चल रहा है कि आपको जो है logo based questions आएगा, बट वो भी कहीं ना कहीं आपके आर्किटेक्चर से ही आएगा, ठीक है. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. There are four options. The A is Archaeological Survey of India. Yes, they have their logo. Archaeological Survey of India के पास भी ऑप्शन है. State Archaeology Department, ये अगेन आर्कियोलॉजिकल चीजों में जा रहा है तो उसका कोई पर्टिकुलर लोगो नहीं होगा. नेशनल म्यूजियम, इट कम्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहां पे भी ऑप्शंस लोगोस का कोई पर्टिकुलर सीन नहीं दिख रहा है. D is the Indian Institute of Architects. So this is the correct option for this question. Okay, so D is the correct option. And यहाँ पे मुझे A जो था वो important लगा कि Archaeological Survey of India का maybe they can ask you about the logo. So what you have to do, this is the correct logo of this particular option. Right? So D is the correct option. There's nothing more to discuss about this question again. Okay, so now the question is name the country from this flag. So these are the few countries mentioned here. Anyone who can comment the right option, which is the right option. Sri Lanka ka to they have that lion wala image na. Ukraine, Austria they have another I think. So the correct option is, let's see the flags of this particular options. So this is your Sri Lanka, and the answer is the correct options I didn't mention here, but the correct option is your Ukraine. Okay, so ये जितने भी options हैं, आप please take the screenshots also. आपको जैसे मैंने बोला जब आप पढ़ेंगे बाद में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है. नाउ 2 क्वेश्चंस जो थे वो हमने ऊपर रहने दिए थे, वो मैंने आपके लिए ही छोड़ा था. तो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन कि क्या होगा. Now, so this was the question. So this is the 3D figure and there is an arrow mentioned here. So which is the correct options they are asking? Now what you have to do, जब arrow की बात करता है तो आप प्लीज आप मेरे थोड़ा कर्सर पे ध्यान देंगे. There is the first level, right? This is the first, second, there is a third, fourth, 5, this is 5, 6, 7 and 8. Now you have to count कि सब में आपके 8 है या नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 courses are there, just like a wall की तरह consider करना. So इसमें आप बिल्कुल देख लेना कैसे करना है, because I think सबको पता होंगे ऐसे questions. I don't know यहाँ पे मैं कैसे explain करूँ, but ये जो arrow है आपको ये प्लेन लेना है, ये वर्टिकल प्लेन लेना है, दिस द वर्टिकल साइड प्लेन, और इसको एक मिरर कंसीडर करके ये जितने भी आपको ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, राइट, इसका जो साइड में जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको सिर्फ वो यहाँ पे लाके एज अ मिरर में जैसे हम पेस्ट कर दिया ना वैसे करना है. तो आप वहाँ पे काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इफ यू विल सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ सी देयर इज अ डी क्वेश्चन, सॉरी, this is the last question that we will be discussing in this particular session. So now there is a front view and there is a left hand side view. तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी में ऐसा क्या करते हैं कि वो सिर्फ फ्रंट व्यू देखते हैं और फिर फ्रंट व्यू में देखेंगे कि यार ए भी है डी भी है. सो द स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज. अगर आप देखोगे फ्रंट व्यू, अगर आप अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू अभी रहने दो, अगर फ्रंट व्यू देखोगे एंड अगर ए एंड डी ऑप्शन देखोगे तो फ्रंट व्यू दोनों को क्या कर रहा है, वो रिजेंबल कर रहा है, राइट. नाउ द थिंग इज वी हैव टू सी द लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑल्सो। तो शिवांगी ने बोला है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही देखना है, you have to see the left hand side view also. So this is your left hand side view, right? So see, there is a triangle and there is another triangle. This is your axis line, right? Okay. Now if you can see front view, B and C is not the correct option. ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो B and C को आप लीव करोगे। फ्रंट व्यू को A and D तो जस्टिफाई कर रहे हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू पे भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। If you can see, there is a left hand side view, right? So D is justifying this two triangles, correct? So D is the correct option for this particular questions. I hope आप लोगों को बहुत ही क्विक सेशंस में थोड़ा समझ आया होगा कि 2023 में जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेर वेरी इजी टू मीडियम, देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट, बट एज पर एज द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स जितने भी हमारे पास भी रिजल्ट्स आए, और बहुत सारे बच्चों से भी यूजुअली टॉक विच आर connected to our YouTube channel also. So mostly students, they didn't score good. Why? The reason is, I think you're not following the right material. So you need to make your own strategy before your preparation. I know the institute is important, the coaching is important, right? But आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए. यू हैव इनफ मटेरियल ऑन आवर ऐप ऑल्सो, ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. वी आर हैविंग दैट क्रैश कोर्स, पूरा आप सारी वीडियोज हैं दैट यू कैन वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग्स देयर, राइट? सो जस्ट मेक अ स्ट्रैटेजी. और अभी थर्ड जून को जो अटैम्प्ट है, या आप लोग अगर जुलाई में देने वाले हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन, those who are preparing for this exam, right? So just practice the paper first, जो भी आज मैंने discuss किया है. Also the quantitative aptitude paper also, and the drawing aptitude paper also. Okay, Shivangi is asking when is the next class. Soon we are keeping the next session for the shift 2 paper. Okay, Shivangi. So उसके लिए we will notify you when we will conduct those sessions. Thank you so much everyone. Thank you for your time. Now I'm ending the stream, and all the very best for your exam. Okay, any queries if you are having, you can call our KP classes team. We will definitely help you in your preparation. Okay, bye everyone. Take care.